चलो आंचल, हम बाग में चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है बाग में। यहाँ तो मंजर ही कुछ और है। हाँ, सच में तुम ठीक कह रही हो। Hello friends, my name is Sharitoma and welcome to my channel. Friends, आज मैं आपको स्क्रैच के अंदर एक और गेम बनाना सिखाऊंगा। उस गेम का नाम है फ्लैपी बर्ड। फ्रेंड्स, चलो मैं आपको इसको एक डेमो दे देता हूँ, इसको कैसे खेलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को इतना सपोर्ट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते शुरू, दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं इसको। फ्रेंड्स, मैंने स्क्रैच ओपन कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गेम को खेल के ये गेम कैसा है। फ्रेंड्स, ये जंप करने के लिए आपको स्पेस की दबाना है। फ्रेंड्स, देखिए, है ना इंटरेस्टिंग गेम। तो आज हम इसी गेम को बनाना सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, वो मेरा क्लोज हो गया है। अब मैं इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम, जैसे मैंने बर्ड ली थी, हम अपनी मर्जी से कोई से भी बर्ड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एनिमल्स पे क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डालता हूँ पैरट। फ्रेंड्स, मेरे को लगा पैरट ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो ये कैट दिख रही है, हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमें चाहिए पाइप्स, तो अब इस पाइप को हम, चलिए पाइप लेते हैं और फिर इस गेम को बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ग्रीन कलर का पाइप बना रहा हूँ। आप अपनी चूज से कोई सा भी कलर का पाइप बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बनके तैयार हो गया है पाइप। फिर मैंने इसको नीचे कर दिया है, क्योंकि पैरेट फिर निकल नहीं पाएगा। और मैं इस पैरेट का साइज कर देता हूँ 80। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैरेट इनके साइज का फिट बैठ रहा है। तो मैं इसके साइज को 60 कर देता हूँ, जिससे कि ये इसके अंदर से निकल पाए। फ्रेंड्स, इसका साइज 60 हो गया है। अब जाते हैं कोड। अब मैं जाऊंगा इवेंट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, तो अब हम पहले लेंगे वेंटलिक्ड। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉरएवर। उसके लिए जाएंगे कंट्रोल पे। अब लेंगे इफ देन। अब सैमसंग पे जाके लेंगे की स्पेस स्प्रेड। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, अगर मैं इस की स्पेस को प्रेस करूंगा तो उसमें मूवमेंट होना चाहिए। अब मैं वेरिएबल जाता हूँ, मैं इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ बार। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट। फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स, अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और मैंने सेट बर्ड टू 0 नहीं, हमें चाहिए 9। सेट बर्ड टू 9। अब हम जाएंगे लुक मोशन पे, जिससे कि हम इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो हम पॉइंट इन डायरेक्शन 90 है। अब हमें 60 डायरेक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 60। फ्रेंड्स, अब मैं वापस से कंट्रोल पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ वेट अंटिल। फ्रेंड्स, अब वेट अंटिल पे हम बाद जाएंगे हम ऑपरेटर्स पे। यहाँ पे लेंगे हम नोट। अब हम यहाँ पे की स्पेस पेज को कॉपी कर लेते हैं और मैंने इसको इसमें फिट कर दिया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, ये बर्ड तब तक मूव होती रहेगी जब तक मैं स्पेस की का ना दबाऊं। और फ्रेंड्स, अब
अब वापस से हम जाएंगे इवेंट्स पे, यहाँ पे लेंगे हम व्हेन क्लिक्ड। अब हम जाएंगे लुक्स पे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से लेंगे गो टू फ्रंट लेयर। मैंने गो टू फ्रंट लेयर ले लिया है। अब हम वापस से जाएंगे मोशन पे, यहाँ पे लेंगे हम गो टू एक्स -186 फ्रेंड्स। अब y को कर दिया है 0। इसका मतलब ये है, ये फ्रंट लेयर में गो टू x लिखा है, उसका मतलब है कि ये फ्रंट लेयर में -186 मूव होगा और y पोजीशन में ये मूव नहीं होगा फ्रेंड्स। अब मैं एक बैकड्रॉप चूज कर लेता हूँ ब्लू स्काई। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लगाऊंगा वेरिएबल पे जाके सेट bar टू 0। अब मैं जाऊंगा वापस से कंट्रोल पे, यहाँ पे इसके नीचे में फॉरएवर लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ मोशन पे जाके फ्रेंड्स मैं पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे चेंज y बाय 10 ले रहा हूँ। अब मैं वेरिएबल पर जाके यहाँ पे बर सेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं वेरिएबल में चेंज बर बाय -0.8 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके इफ देन ले रहा हूँ और मैं स्प्राइट 1 का नाम रख देता हूँ पाइप फ्रेंड्स। अब मैं सेंसिंग पे जाके टचिंग इफ देन टचिंग पाइप। अब मैं जाऊंगा कंट्रोल पे स्टॉप ऑल फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है, अगर ये बर्ड पाइप से टच हो गई तो ये पूरा गेम रुक जाएगा। अब मैं वापस से इवेंट्स पे जाके व्हेन क्लिक्ड दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फॉरएवर लूंगा। अब मैं यहाँ पे रिपीट एंटिल ले लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने रिपीट एंटिल ले लिया है। आप रिपीट एंटिल के अंदर हम फिट करेंगे ऑपरेटर्स इज इक्वल्स टू 90। जो यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है, हम इसके लिए मोशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम नीचे से यहाँ से डायरेक्शन लेंगे फ्रेंड्स। इसका मतलब है ये डायरेक्शन 90 में रहेगा। और फ्रेंड्स हम यहाँ से लेंगे 5 डिग्रीज। अब हमने बर्ड का सारा काम सेट कर लिया है। अब हम पाइप पे जाएंगे। अब मैं इस पाइप का एक्स कर देता हूँ 0 फ्रेंड्स। मैंने 0 कर दिया है पाइप का फ्रेंड्स। अब मैं जाऊंगा व्हेन क्लिक्ड हाइड। अब मैं जाऊंगा फॉरएवर। अब मैं जाऊंगा क्विक टर्न ऑफ माय चेंज वेट 0.8 सेकेंड्स। अब मैं कंट्रोल के अंदर से ही व्हेन आई स्टार्ट एज अ कोलन ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके शो फ्रेंड्स। अब मैं वापस से मोशन पे जाऊंगा गो टू एक्स 245। अब मैं वाई पे सेट करूंगा ऑपरेटर्स पिक रैंडम -50 टू 50। अब मैं वापस से कंट्रोल के ऊपर जाके यहाँ पे रिपीट एंटिल ले रहा हूँ। अब मैं ऑपरेटर्स पे जाऊंगा फ्रेंड्स। अब मैं इसको ले रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं इस 50 को हटा के -250 कर रहा हूँ मोशन। फिर हम यहाँ से एक्स पोजीशन को कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके अब मैं यहाँ पे चेंज एक्स बाय -7। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा फ्रेंड्स। अब हमारा गेम बन चुका है। अब ये बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसका देखते हैं ये कैसा बना है। फ्रेंड्स ये गेम काम कर रहा है फ्रेंड्स। ये उससे टच हो गया तो ये स्टॉप हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
Okay friends, bye. I will meet you in the next video. Hi everyone, it's Zoe from the Scratch team, also known as Zinnia. Today I wanted to show you how to make a catch game in Scratch, a game where objects are falling from the sky and you catch them to score points. It could be any object that's falling and it could be any character or object that's catching it. We'll break this into 5 steps. Move the catcher, make your object go to the top, fall down, catch it, and keep score. Let's get started. First, let's pick the character or object that you want to be catching things, and we're gonna make it move with the arrow keys. You can just click this button that says choose a sprite, and you can pick anything you want. I'll use the bowl. And let's add a backdrop too. I'll use the boardwalk. So, we want the bowl to be able to move side to side with the arrow keys so that it can catch whatever is gonna be falling. We can use this block, change X by 10, to make the bowl go this way. Let's make the bowl do this if the right arrow key is pressed. There's a really helpful block for this, which is an if-then block. In case you haven't seen an if-then block before, here's how they work. I find that they're really easy to use. If-then blocks will make a sprite do the code that's in here only if the thing that's in here is true. So in this example, if the cat is touching the mouse pointer, it will play the sound meow. But if it's not touching the mouse pointer, it won't play any sound. So in our game, if the right arrow key is pressed, we can make the bowl change X by 10. Let's try it out, and let's make it start when I click the green flag. So I'm pressing the right arrow key, but nothing is happening. That's because this if-then block is only being checked once. When I click the green flag, it's asking, is the right arrow being pressed right now? But then it just stops doing the code. And what we want it to do is always be checking if the right arrow key is pressed at any moment. So we can just put this inside a forever loop. And now this is what we want. It's always checking, is the right arrow key being pressed? And to make the bowl go to the left, instead of changing X by 10, we can change X by -10. Let's make it do this if the left arrow key is pressed. And let's put this in the forever loop too. There we go. Now we have a catcher that we can move with the arrow keys. Next, let's pick the object that we want to be falling and make it go to the top of the screen. You can use any object you want. I'll use the apple. At the beginning of the game, we want the apple to start at a random place at the top. This block, go to random position, will make it go to a random place. And this block, set Y, can set how high up a sprite is. In Scratch, Y represents how far a sprite is from the bottom of the screen to the top of the screen. So if we set Y to 0, the apple goes up to about the middle. If we set Y to 20, it goes up a little higher, and 180 makes it go all the way to the top. Now, if we make the apple go to a random position and then set Y to 180, it goes to a random place, but then Y is always set to be at the top. And that's just what we want. When the game starts, it starts at a random place at the top of the screen. Now, let's make our apple fall down. If we change Y by 10, the apple goes upwards. To make it go down, we can put in a negative number. And if we put this inside a forever loop, it'll keep falling till it hits the bottom. But now it's stuck. So right now, we have an apple that can fall one time. What we would like it to do is, if it's at the bottom, it goes to the top. This is another good time to use an if-then block. So let's drag one out. In here, we need to put some code that checks if the apple is at the bottom. Now, how can we tell if the apple is at the bottom? Well, remember how I said that Y represents how high up a sprite is? Let's look at the apple's Y while it's falling. Its Y position starts at 180, then it goes to 170, 160, it gets to 0, then it goes to -10, -20, and then down here it's like -170. So what we can test in here is, we can just check if the Y position of the apple is less than -170, because if the apple's Y position is that low, then we know it must be at the bottom. So to test that, we can drag out this round blue block that says Y position, and drag out a green less than block from the operators category. This block just checks if the thing on this side is less than the thing on this side. We want to check if Y is less than -170, so we can put Y on this side and write -170. Now, if the apple is at the bottom, what do we want it to do? Well, we want it to go back up to the top, and we actually already have the code for that, because we wrote it right here. So let's just put a copy of that same code in here. And let's put this code inside our forever loop. So every time the apple moves down by -5, it asks, am I at the bottom? There we go. Now we have an apple that can fall, and when it gets to the bottom, it goes back up to the top. Now, let's make it so that we can actually catch the apples instead of them just falling through the bowl. If the apple touches the bowl, then the player caught it, so it should stop falling and
go back to the top somewhere else so it can start falling again. So this is another good time for an if-then block. There's this helpful block that says touching mouse pointer, and instead of mouse pointer, I can choose bowl. And now this block will test if the apple is touching the bowl. And if the apple is touching the bowl, we want it to go back to the top. And again, that's just our same code from before. That makes it go to the top. Let's put this inside a forever loop, and let's make it play a sound when we catch it. Nice. Lastly, let's add a score so that you get points for every apple you catch. To make a score, we can add a variable. If you haven't seen this before, a variable lets you keep track of a certain number in your project. So we can make a variable called score and use it to keep track of how many points we've scored. We can use this change score by 1 block to make the score increase. And we can put this block here, so every time we catch the apple, the score increases by 1. And when the game starts, let's set the score to 0. So it resets. There we go. That's a catch game. Anyway, that's basically what I wanted to show you today. I love catch games because I feel like they can be any type of game based on the objects that are falling and the character or the object that's catching them and the backdrop you choose. You could be catching pieces of trash to keep an ocean clean, or a pet could be catching treats, or just really anything. I'm so excited to see all the things you make. Well, I'll see you next time. And scratch on! Hi everyone, it's Zoe from the Scratch team, also known as Zinnia. Today I wanted to show you how to make a jumping game in Scratch. By the end of this tutorial, you'll be able to make a game like this one, where you can have a character jumping over moving obstacles. We'll do this in 5 steps. Make your character jump, make a moving obstacle, stop the game, add more obstacles, and keep score. Let's get started. So first, let's pick a character and make it jump. You can pick any character you want. I will pick the chick. And let's also choose a backdrop. I'll use the blue sky. To make the character jump upwards, we can use this block, change Y by 10. And if we make it repeat that 10 times, it'll go up really high. Now, we also want it to come back down. To do this, we can change Y by -10. And let's put that in a repeat loop too. Nice. It would be fun for the character to jump when we press the space key, so we can add the when space key pressed block on top, and then we can make it jump with space. We can also enhance the jump by making it play a sound, so we can just add this block, start sound chirp. Nice. Now our character can jump. Next, let's make a moving obstacle so our character has something to jump over. First, let's pick an obstacle. It could be anything you'd like it to be. I'll pick the egg. I'm actually going to make the egg a little smaller by setting its size to 80. You want the obstacle to be a bit smaller than your character, so your character can jump over it. Now, we want our obstacle to start at this side of the screen and glide over to this side of the screen. First, how do we tell the egg to start over here? We can tell it to go to a certain position. With this block, go to X and Y. In Scratch, every position on the stage has a certain number X and a certain number Y. In case it's your first time seeing this, X represents how far your sprite is from this side of the screen to this side of the screen, so side to side, and Y represents how high up your sprite is. So we need to tell the egg to go to this spot right here. Here's an easy way to do that. Just drag the egg to where you want it to go, and then the Go To block in the menu over here actually updates to the exact X and Y of that spot. So we can just drag this block out. And then to make the egg glide across the screen, we can use this block, glide to XY, which makes the sprite glide smoothly to a certain place. We want the egg to glide to here, so we can just drag the egg over here, and then this glide block in the menu updates to the X and Y of this spot. So we can just drag that out too, and connect it, and now the egg can glide across the screen. Now, the egg glided once, but we want more eggs to keep coming. We can do that by putting this in a forever loop. And let's make this start when we click the green flag. Gliding across the screen in just 1 second is a little fast, so let's make the egg take 3 seconds to glide across the screen. Now we can jump over obstacles. Next, let's make the game stop if we run into the egg. There's this block, stop all, that will stop everything in your project. And we can make the egg wait until it's touching the chick. And then if it does run into the chick, have it stop the game. Let's try that out. I'll purposefully not jump. There you go, everything stopped. Oh,
And let's fix this problem. Sometimes the chick gets stuck in the air because its code gets stopped when it runs into the egg, but it might not have been finished with its jump, so it's just frozen there. So we can fix this by making the chick go to a starting position when the game starts. So I'll put my chick where I want it to start, and then I will drag out a go to block, which will be set to that X and Y of that spot, and make that happen when you click the green flag. There we go. Now, to make our game even more fun, let's add more obstacles. It's actually really easy to do that. Just right-click on the egg and click duplicate. Now we have another egg with all the same code as the first egg, so it will glide just like the first egg does. Let's try it out. So we can't see the second egg. That's because it's right on top of the first egg. They have the exact same code, so they're gliding at the exact same time. So let's make the second egg wait 1 second before it starts gliding, so that they're spaced out from each other. Now, this looks good, except this egg is just sitting in the middle of the screen while it waits for 1 second. So let's make it hide when the project starts, so it'll be invisible, and then make it show once it's done waiting. That looks much better. And lastly, let's add a score so the player earns points every time they jump over the egg. To do this, let's make a variable. In Scratch, you can use a variable to keep track of a certain number in your project. So I'll make a variable called score, and we'll use it to keep track of the player's score. Every time the player manages to complete a jump, we can increase their score by 1. Nice. And when the player loses and the project restarts, we can set their score back to 0. There we go. That's a jumping game. I hope this tutorial helped you out. There are lots of other things you could try. You could have multiple kinds of obstacles. You could have, once the player reaches a certain score, the backdrop changes, so it's like they went to level 2. I can't wait to see all the things you make. Well, I'll see you next time. And scratch on. Hey everyone, welcome to my airplane shooter series. Today I'm going to show you how to make a shooter like this. In the shooter, you can see we can shoot these enemies right here. Some of them are following us, and some of them are just waving around, kind of. They're just on their way. I don't know where they're going, but you can see we just got a nitro power up. That makes us move really fast, wave complete. In the game, you can click on the upgrades, and you can upgrade different parts of your airplane. So maybe you want it to be a healer airplane instead of a shooter, and these enemies are about to kill me. No! Alright, we're in Scratch. Let's rename our project to Airplane Shooter Aeroplane. Imagine you spell aeroplane like that. This is not an airplane. Let's go to the costumes, and let's delete the first costume, and let's also delete. We're going to be drawing our own airplane. Later I'll provide you with some assets, but for now, let's just click on the rectangle tool, change the fill to dark blue. Okay, and I'm just going to draw a rectangle on the screen. And we give it some wings. We give it a tail. And yeah, I know, it looks terrible. We'll fix that later. Let's select everything on the stage and let's press group. Now let's move the airplane to the center of the screen. It should snap just like that. Alright, let's go to the code. And we first need to reset the position of our airplane. Let's go to events. When the green flag is clicked, let's set the size to 100, and let's go to X minus 150 and Y 0. So that should, if we press the green flag, it should go to the left side of the screen. Now we need the airplane to follow the mouse, and we can use that with the point towards mouse pointer block. Let's drag that out. And since we always want to face towards the mouse, let's put a forever loop around that. Our airplane should be facing towards the mouse. Now we just need the airplane to move along with the mouse. So that's pretty simple. Go to motion. Let's drag out and move 10 steps. So when we press the green flag, you see the airplane is following the mouse, but we want it to stay on the left side of the screen. So that way we can aim at enemies that are moving from the right. Let's go down and let's drag out set X to minus 150. When we press the green flag, there we go, you'll see the airplane is now on the left side of the screen. So if you wanted to change the speed, you wanted to make the airplane move faster, you could double the speed perhaps. And now we're moving 20 steps, that's twice the speed. But I like mine at 10 steps. Okay, so now we just need the airplane to shoot. Alright, and since we didn't rename the sprite, let's call this airplane. Since no, it doesn't look like one, but it is an airplane. We need the bullet. Let's paint the sprite. Let's call it bullet. And for now, let's just use the circle tool. Like I said, I'll be providing you with some art that you can use.
Alright, so let's move the circle into the middle of the screen. There we go. Let me change the color, maybe something bright red. Let's go to the code. So we want to shoot the bullets every time we click on the mouse. Let's go to events and let's drag out when green flag clicked. We first need to detect if the mouse is down. So let's drag out a forever loop so we're always detecting if mouse down. Then let's go to control. Let's drag out create clone of myself. Now we just need the bullet to start at the airplane and we need it to shoot out to start moving. So to do that, let's drag out when I start as a clone. We need to go to motion and drag out go to airplane. Now let's go to control. Let's drag out a repeat until. We want to keep on moving until we touch the edge. So let's drag out delete this clone and put it after. Let's go to sensing and drag out touching edge. And here we just want to move 10 steps. Now there's one problem. You'll see this bullet on the screen not doing anything. That's the main bullet. And since the bullet is not a clone, it's not going to be moving. Let's go to looks and we just want to hide the main bullet. But we want the clones of the bullets to show. So let's drag out a show block. Alright, so let's click. You'll see we create some bullets. If I'm facing up and I shoot a bullet, the bullet is still going straight to the right. So we want the airplane to be able to aim the bullets. So what we want to do, let's go to motion and let's drag out the point in direction 90. Now we're going to go to sensing category and let's drag out, let's scroll down backdrop number of stage. Let's put that inside of 90. What we want to do is click on the drop down next to stage, change it to airplane. You'll see this drop down changes. So we want this to be direction of airplane. Now when we press the green flag, you'll see the bullets are kind of aiming in the way we want it to. Okay, so we can also change the speed of the bullets, maybe 20 or 30. I'll change it to 25. So there we go, those are the bullets. Now you'll see if we hold down the mouse, that makes a stream of bullets. Now, that would be impossible. That would make the game way too easy and the enemies would just be destroyed every time they go onto the screen. So we want to wait a little bit until we create the next bullet. What we want to do, go to control and let's drag out wait 0.3 seconds. So now there should be a delay in between each bullet. Alright, so now that we have the bullets, let's put up some little enemies on the screen that are just going to be following the player. Okay, since we have this airplane sprite right here already drawn, it's beautiful, right? Let's right click and duplicate it and let's call it enemy. Okay, we want enemies to start on the right side of the screen. So instead of minus 150, let's put in 240, which is all the way to the right. And instead of point towards mouse pointer, let's change it to point towards airplane. And let's drag out the set X to minus 150. Let's change this to move 5 steps. So when the airplane starts, the enemy should be moving towards the player. Just want to differentiate the enemy from the player. Let's go to the costumes. Let's click on the fill bucket tool and let's change the color to red. So that way we know this enemy is bad. Alright, so right now there's only one enemy on the screen. Starts following the player. We want more enemies to start spawning. So let's drag out this point towards airplane, move 5 steps. Let's go to control and let's drag out when I start as a clone. This block is only going to run once, so let's drag out a repeat until, and we want to repeat until we want the enemy to keep on moving until it touches the bullet. So let's go to sensing and drag out touching. After we touch the bullet, we just want to destroy the enemy, so let's drag out delete this clone. We have the clone code, but we need to create the clone. So let's drag out wait 1 second. Let's change it to 0.5 maybe, and let's drag out create clone of myself. Alright, so let's press the green flag. You'll see, there we go. There goes a stream of enemies. I can take them all out. Boom. I just want to make the enemies spawn from random positions on the screen. So from the right all the way to the bottom. That's pretty easy. Let's go to motion.
And let's go to random position. We're going to be putting this under when I start as a clone. After we've gone to a random position, we want to move the airplane to the right side of the screen. Set X to 240 to press the green flag. So you see this enemy spawned from the bottom. These enemies are spawning from the top. And they're all random positions. One last thing, you'll see the enemy main sprite is on the screen. We want it to be hidden. So we're going to do like we did in the bullet code. We're going to hide after when green flag clicked and show when I start as a clone. So let's do that now. When green flag clicked, let's hide. When I start as a clone, let's show. Alright everyone, so this is the basis of our airplane shooter. In the next tutorial, we're going to add health to the enemies and both the player. And we're going to add some different art, as well as maybe sound effects and even a background, and later upgrades. So everyone, make sure you like the video, make sure to subscribe to the channel. Thanks for watching and I'll see you guys. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिगर्ड स्क्रैचर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप नारुतो फाइटिंग गेम अपने स्क्रैच के अंदर ओपन कैसे करके खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बिना कुछ देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नारुतो फाइटिंग गेम फ्रेंड्स बहुत ही इमेजिंग गेम है। टोटल फ्रेंड्स फाइटिंग में पावर्स के साथ फाइटिंग होती है फ्रेंड्स में, और इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी इस गेम का कोड हो तो फ्रेंड्स उसके लिए भी मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए मैं अभी आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी की किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, यहाँ दो प्लेयर हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको प्लेयर 2 से खेल के दिखाता हूँ। प्लेयर 2 येलो हेयर। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने डी प्रेस करा तो इधर आता है फ्रेंड्स, और एफ प्रेस करने पे पैर चलाता है। प्लेयर 1 फ्रेंड्स, इसको वापस बैठ लिया कैसी लगी कमेंट करके जरूर। देखिए फ्रेंड्स, जो पावर है सिंगल में स्टार्ट करती है। फ्रेंड्स, यहाँ तो आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसके कोड के लिए बताता हूँ कि आप इसके कोड को कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कोड के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और मैं आपको स्टेप भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। फ्रेंड्स, अपने कंप्यूटर के अंदर मैं पहले फ्रेंड्स म्यूज़िक बंद कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर
क्रोम खोल लिया है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, बस क्रोम के अंदर सर्च करना है स्क्रैच। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने स्क्रैच सर्च कर दिया। फ्रेंड्स नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ, ओके फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स कनेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स रिस्टार्ट, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रीलोड हो रहा है पेज। फ्रेंड्स को टाइम ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्क्रैच खुल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आशुतोष 33 सर्च करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना आशुतोष 33 सर्च किया। तो ये फ्रेंड्स ये मेरी आईडी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको फाइटिंग गेम दिख रहा है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा फाइटिंग गेम खुल रहा है। तो यहाँ से आप सी इनसाइड कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारे कोड दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप कोड देख के बना भी सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हो कि पूरा गेम ही सेव हो जाए तो आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सेव टू योर कंप्यूटर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सेव हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जहाँ पर आपने डाउनलोड करा है मैं वो फाइल खोल के दिखा देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स शो इन फोल्डर करेंगे तो आपको फोल्डर शो करेगा जहाँ पर आपके ये डाउनलोड हो। फ्रेंड्स देखिए हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको यहाँ पर अपने जो आपके डेस्कटॉप पे स्क्रैच है मैं उसके अंदर उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको पूरा काट देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आना है। इसमें आप अगर आप पे स्क्रैच है तो आप स्क्रैच सर्च करके निकाल लीजिएगा, नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख के स्क्रैच डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्क्रैच डेस्कटॉप खुला है। फ्रेंड्स ये अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा खुला है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा खुल चुका है। तो आप यहाँ फाइल पर क्लिक करके लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर कर लें। तो यहाँ से आप फाइटिंग गेम करके ओपन कर लीजिएगा जो फ्रेंड्स आपने डाउनलोड करी है फाइल। देखिए यहाँ पर ये गेम खुल चुका है। तो फ्रेंड्स इसको दोबारा आप खेल के देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स वही गेम है बिल्कुल सेम। देखिए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नई वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए। In this video, I'll be making a scratch game in 1 minute versus 1 day. Believe me, the ending is crazy, so let's go. 1 minute, let's go. Okay, so the first, let's delete him. Let's go paint our little player dude. Oh, yeah, we could probably zoom in, go like that, go like boom. Oh, God. Boom. That's his gun. Why does it look like a beak? Oh, no. Yep, okay. He looks good. Yeah, okay, I can't. Okay. Where is it? Key, what, it's W, A, S, D, W, change Y, S, where's the S? Okay, then we gotta duplicate this a couple more times. D and A, that's at the top. D, oh no, that's like the right. And then A, come on. Oh, but that's not A. Jesus, come on. Dude! Oh my. Can I make him have a gun at least? Hello? Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Let's go. Come on. Okay, I think we did it. Okay, you can shut up. I get it. This is the 1 minute game. Yes, it's a masterpiece. Wow, look at the gun. Look at the player. He's quick as hell, bro. Yeah, he's shooting like air right now. You probably can't tell. It's like a ghost bullet. They'll never see him coming. Yeah. Yeah, next game. So 24 hours, let's begin. All right, so we can delete Scratchy, but I can't make the art in here. I want it to be pixel art. So now we're in A Sprite where we can make our pixel art, and I'll be back when I'm finished. So here we have our guy in our animation. I don't know about you, but this guy looks kind of familiar. Yeah, let's not worry about that too much. So let's export it into Scratch. And now this is when he's facing the right. So I'm gonna do R, and I'll be back when I'm finished making the left. And so now we have our animation here and our animation here. I'm gonna name him to player, go back to the code. And so now I can code the movement. If I clicked forever, if key space W, then I'm gonna
make speed X, speed Y for all variables. Set both these guys to 0 on begin. And if W, change Y by, we'll go like 3, and then do right click duplicate if S, -3. And I'm going to set Y speed to times 0.75 itself Y speed. And then just change Y by Y speed. So now if we go up here and press play, let me just put him to 0, 0 real quick. There we go. We can see that he moves up and down really smoothly. Maybe a little bit too smooth. I'll do like 0.6. And if we go like this, boom, perfect. Now I can just get rid of these, and I'll copy the same thing for the horizontal X speed. Now that we're all done that, we can go back here, and whoa, that's cool. We can got him moving around. I think he's a little bit slow, so I'll go like 4, 4, -4, -4. And to keep everything organized, I'm gonna make player speed and player friction. I'm gonna set player speed, and I'm gonna set player friction to 0.6 and 4. So if I do, I can get rid of both of these. Player speed can go here, player speed can go here, and then I have to do a negative player speed because it's -4, and then put the friction in for this. It's just so I can change the player speed and everything a little bit easier. So now if I go back in here, now it still works the same. Beautiful. But what about the animations? This is important. This is what I'm going to be using here for the animation. I'm going to change costume by 1. You'll see why. That's going to be the speed of the animation. And I can do when grip clicked forever if I'm going to grab the mouse X. If mouse X is greater than 0, it's going to switch the costume. It's going to start at 1, and then it's going to rotate down to 2. Do I know what this all is? No. Am I going to explain it? No. So if I do this, he's on my right. We can see that it plays the animation, and it's really fast. So I think I'll turn down to like 0.25, or I'll do like 0.1. Beautiful. So it's just going to cycle through 1, 2, 1, 2, 1. And if I do else, so that means if it's on the left, it's going to go to start at 3 and just mod 2. And so it's going to be working wherever your mouse is, essentially, because it's going to be a shooter type of game. And so now I'm going to make a crosshair. This is our crosshair. File export. We can drag that in here. Boom. And we can send it to 200 just like our character. And when grip clicked forever, go to mouse pointer. And so now it's going to look like a little bit more sense if our character's looking this way. Cool. But are you ready for this? 3, 2, 1. Boom. This thing, am I gonna explain it? No, I'm not. But essentially, it smooths out the movement, so it just looks a lot cleaner than before. Pretty cool. And now I'm gonna add a little detail of just rotating it. I think this looks really cool. So let me just finish all the animations, just like boom. Now we can see we have animations for every single thing, I guess. Yeah, pretty cool. I don't know, it looks pretty good. Also made like different eyes, so now they like look at me. Pretty cool. Now little bro looks happy. Let's go. Now I need to give him his gun, which it would make sense for it to be white, so let's make it white. And so ready. Now we have this really cool looking gun, and we can see it switch from side to side, and it looks awesome. Yeah, we can also see if I don't move it, it goes up and down a little bit, which is really nice, good detail. Now we're just one more step closer to finishing the game, which is the bullet. So let's just do that real quick. Paint bullet, zoom in all the way, convert to bitmap, make a bullet. Yeah, that looks like a bullet. Zoom out. Wait, where the heck is the middle at? Oh, right there it is. Change it to 200, name it bullet, and when grip clicked, hide. And forever, if mouse down, then create a clone of myself. Wait 0.1 second. I'm actually gonna drag this into the gun, get rid of that. Here, create a clone of bullet, and then do move -5 steps. You'll see why in a second. Go back to the bullet. When I start as a clone, also need to do forever hide, and remove the hide there. And I can do go to gun, repeat until touch an edge, move 10 steps, then delete itself. And we gotta make sure he shows. So I think that is it. And I think I should do point in direction, gun, direction. I think that could be a good add-on. And so let's see how that works. Okay, that's looking pretty good, but I think I need to make it up a little bit because it's kind of off. Something like that. Now if I go back, we can see that. Yep, it looks perfect. Except for the bottom one though. I'm going to copy that, and where do I move it? Do I move it up? No, I move it. Oh damn, what the hell? No, I move it down like that. I think that should be good. Perfect. And so I'm gonna do grab this in here, change it to bullet 2. I'm gonna name it bullet R, bullet L for right and left, and then I can just put that in there beforehand, and I can get rid of this. So basically, if the direction is less than 0 on this side, it's gonna switch to the right bullet, and if it's not on the left side, it's gonna change to the right. And so we could see that in action. Maybe we won't, because it has to be X position, right? No, it's not. I'm actually dumb as hell. Oh, maybe I'm not dumb. I just had to change these two around. My bad. And so now we have this guy. How cool. Doesn't this look super cool? And now one of our last steps is to make the enemy. So let's go do that. So now that I have the slime animations, I can begin coding their AI. So very simply, since this is just a test, I'm not going to make clones. I'm going to do when grip click, go to 0, 100 at the start, and repeat until point towards player. Wait a second. Also have to start jump. And then we're going to do push to jump 2, wait 0.1 seconds. And instead of that, I'm going to do next. And I'm going to repeat that, I believe, 6 more times. Well, I guess, yeah, 6. So let's just see what that looks like. Oh, what the freak? Set rotation style to don't rotate. So we can see this guy jumping towards us. Pretty simple and cool. He almost looks like a rock. Yeah, he's definitely just a rock. So now I could just take all this, do create clone of myself. I don't know, I could like repeat that like, I don't know, 3 times. And then I could do when I start as a clone, but I'm gonna have to do hide and then show. And I could just do go to random position. There we go. We have our slimes that kind of look like a rock.
As we can see, they're gonna spawn randomly. This is not the finished game, trust me, but yeah, they look pretty cool. And now I just created a shadow for the player, which I think it adds like a pretty cool amount of detail. Damn, this looks so cool. Oh my god. But now I think we should add some damage and some HP for our player. Let me just quickly finish everything I need to do to finish the game. Let's go. So I changed the enemy to green, and I also made the start menu with the start button and the logo. Right after that, I imported it into Scratch, and it actually looks pretty good. Wow. Same with the enemies. They look so sick. I then worked on a score counter to see how many enemies you killed, and I added a little bit of sound effects. I then thought the game was getting kind of boring, so I decided to add another gun that you could use to kill the enemies. I first started off with a katana and then made a shotgun, and I will say that these took forever, and no, the sword does not look the greatest animation, but it's whatever. I then had to model a background because I was long overdue, and this took forever, but it looks amazing. And then I thought to myself, well, only having one enemy is kind of lame, so I made this really big enemy and then this really small but fast enemy. With that being said, I only need a few things to polish up the game, so I made a "you died" screen, and I think we can call this game finished. With me working on the project on and off throughout the day, we completed it in 24 hours. Now, if you want to learn programming yourself, there's a free and easy way to do so. Thanks to today's sponsor, Brilliant. Brilliant has thousands of lessons from hard foundational math to easy computer science and programming, with tons of new lessons added every month. With their interactive learning, it is so much easier to understand the problem at hand, while you can master science, math, and computer programming just from using their course only 15 minutes a day. My personal favorite is CSM programming because coding has been one of the loves of my life. Learning from observation is proven to be the best way to learn, rather than letting your boring math teacher yap for an hour and 15 minutes a day. If Brilliant sounds like it's for you, try everything Brilliant has to offer for a full free 30 days. Visit brilliant.org/zonkscratch or click on the link in the description. The first 200 of you will get 20% off Brilliant's annual premium subscription. Thanks again for Brilliant sponsoring this video. Now back to the challenge. Without further ado, I present to you Shooter. By the way, if you want to play this game for yourself, link in the description. And if you made it this far, you may as well like and subscribe. Hello everyone, in this video we will make the parrot fly in desert. First of all, we'll change the sprite. We don't need cat over here, so we'll delete cat sprite. Choose a sprite from the library. Click on animals. Now choose parrot. Now the backdrop we need to change. We'll choose desert background. The parrot size is a little big, so we'll change the size of the parrot to 80 to make it a little small. Now we'll make script for it. The first command, go to events when space key is pressed. Here the program will start executing when we press space key. Instead of green flag, here we are taking space key. Control block forever. Next commands we put in the forever loop. Go to motion, move 10 steps. Again click on control block. Wait 0.1 second.
Click on looks. Next costume. From the motion block, if on edge, bounce. See, parrot has two costumes, two positions. After every 0.1 second, it will change its position, and as soon as it reaches the edge of the screen, it will bounce. In every loop, it will take 10 steps. The program will work only when we press space key. We'll make it full screen and see the parrot fly. As soon as it reaches the edge of the screen, it bounces. Click on red color stop to make it stop flying. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले एक सिंपल स्पेस शूटिंग गेम। तो ये बहुत इजी गेम है और आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगा बाय डिलीटिंग दिस कैट, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चूज स्प्रेड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं सर्च करने वाला हूँ रॉकेट शिप। तो आपको ये एक स्प्राइट जो है यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं इसका नाम दे दूँगा यहाँ पे प्लेयर। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे इसके कॉस्ट्यूम्स के टैब में जाऊँगा और यहाँ से और मैं इसका जो है साइज़ को छोटा करूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं इसको ऑल्ट की प्रेस करते हुए छोटा करने वाला हूँ। और ये यहाँ पे देखिए एकदम ये सही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर कोड हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इसका एक इजी सा। तो मैं यहाँ पे लूँगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक फॉरएवर लूप और मैं यहाँ पे रखूँगा सेट एक्स टू माउस एक्स। तो इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमारा माउस जाएगा वहाँ पे हमारा जो है प्लेयर का जो है स्प्राइट भी जाने वाला है। यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक पेंट करेंगे एक स्प्राइट और मैं इसका नेम देने वाला हूँ बुलेट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये स्क्वायर वाला बॉक्स है मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ से, और मैं एक जो है एक लाइट कलर का एक मैं ये बनाऊँगा बुलेट। तो लाइक कुछ ऐसे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर दूँगा। अब इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे लाइट बुलेट ले रहे हैं तो हमें एक बैकग्राउंड भी डार्क चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं जो है एक ब्लैक फिल कर दूँगा हमारे ये स्टेज को। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेज है वो बन गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे हमारे बुलेट के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी हम स्पेस की प्रेस करते हैं या फिर अगर हम यहाँ पे माउस डाउन करते हैं, मतलब अगर हम जो है क्लिक भी कर रहे हैं या फिर अगर हम स्पेस की भी प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे जो बुलेट है उसके क्लोन्स बन जाने चाहिए और वो जो है हमारे प्लेयर के पास जाएंगे और उसके बाद अगर वो एज को टच करेंगे तो वहाँ से वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा कोड बनेगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, उसके बाद फॉरएवर इफ मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑपरेटर्स के अंदर, यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ये एक और ऑपरेटर, ये एक और वाला ऑपरेटर है। इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इफ़ की स्पेस इज प्रेस्ड या फिर माउस डाउन। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बुलेट है वो अपने क्लोन्स बनाएगा। तो माउस डाउन का मतलब जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है मेरा माउस डाउन है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल के अंदर, और कंट्रोल्स के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं लेने वाला हूँ क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और यहाँ पे मैं वेट फॉर 0.3 सेकेंड्स भी लगाऊंगा, 0.3 सेकेंड्स। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे हमारे मेन स्प्राइट को हाइड करूँगा, क्योंकि हम हमारे क्लोन्स को शो कराएंगे। इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। तो ये आपको कंट्रोल्स के अंदर मिलेगा व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे रिपीट अनटिल, और रिपीट अनटिल से पहले हमें एक शो भी लगाना होगा, शो ब्लॉक। तो इससे जो है हमारा जो भी क्लोन है वो पहले शो होगा, उसके बाद में यहाँ पे जो है मूव करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ गो टू दी प्लेयर। और जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये हमारा प्लेयर है, और आप लोग प्लेयर के ऊपर एक बार उसको क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा ये हमारा लूप। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है गो टू फ्रंट लेयर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब है, बट पहले जो है हम यहाँ पे रिपीट अनटिल के अंदर हम जाएंगे हमारे बुलेट के स्प्राइट के अंदर, और यहाँ से मैं यहाँ पे लूँगा रिपीट अनटिल टचिंग एज, रिपीट अनटिल टचिंग एज। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ चेंज y by 10। और जैसे ही जो है यहाँ पे हमारा जो बुलेट है वो एज को टच करेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल्स के अंदर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा डिलीट दिस क्लोन। और डिलीट दिस क्लोन को मैं रिपीट अनटिल के जस्ट बाद में ये सेट करूँगा, ना कि मैं इसको रिपीट अनटिल के अंदर नहीं रखने वाला, बट मैं इसको बाहर रखने वाला हूँ। क्योंकि जैसे ही जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे बुलेट्स निकल रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्पेस की भी प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे जो है हम हमारे बुलेट्स को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे अच्छी है। और अभी आप देखोगे तो हमारे जो बुलेट्स हैं वो हमारे स्पेसशिप के नीचे से आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है हमारे स्पेसशिप को गो टू फ्रंट लेयर रखा था। तो इससे क्या होगा कि हमेशा ये कंटिन्यूस फ्रंट लेयर के ऊपर रहेगा, और कोई सा भी जो बुलेट का स्प्राइट है वो कभी भी इसके ऊपर नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा बुलेट का जो स्प्राइट है इसका मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे ब्लू टाइप का रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कलर सेम हैं। और अभी जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो है स्पेस शूटिंग गेम एकदम बन गया है, बट इसके अंदर हम लास्ट चीज़ लेके आएंगे जो कि है एनिमीज़। तो एनिमीज़ के लिए मैं यहाँ पे चूज स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं सर्च करने वाला हूँ घोस्ट। तो यहाँ पे आपको एक घोस्ट का स्प्राइट मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे छोटा करूँगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ पूरे को कुछ इस तरह। उसके बाद मैं ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसको एकदम छोटा करने वाला हूँ। ज़्यादा छोटा हो गया ये। ओके, ये इतना देखिए एकदम सही है। अब जो है मैं सेम चीज़ करूँगा हमने जैसे बुलेट के लिए किया था, बट ये जो है हम कंटिन्यूस रखने वाले हैं, ना कि जब हम स्पेस की प्रेस करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, लूँगा मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, लूँगा मैं फॉरएवर क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, जो कि आपको कंट्रोल के अंदर ही मिलेगा, क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेट फॉर 1 सेकेंड लगा दूँगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना चाहिए, उसके बाद नहीं तो कंटिन्यूस ये क्लोन्स अपने बनाते रहेगा। तो मैं इसको एक 1 सेकेंड जो है रुकाऊँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको जो मैं पहले हाइड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हाइड करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल्स के अंदर, और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, अब मैं यहाँ पे जो है बोलने वाला हूँ गो टू, और एक्स जो है इसका एकदम ऊपर होना चाहिए, सॉरी एक्स में ये जो है वेरी करना चाहिए, बट इसकी जो वाई पोजीशन है वो बहुत ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी मैक्स पोजीशन जो मुझे मिली है वो है यहाँ पे 190,
और मैं इसको शो भी करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको शो कर दूँगा और जो हमारी एक्स पोजीशन है इसको मैं यहाँ पे जो है इसको मैं वेरी रखूँगा, मतलब यहाँ पे ये रैंडमली इसकी जो है एक्स पोजीशन ये सिलेक्ट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लूँगा पिक रैंडम फ्रॉम 230 टू -230। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं ये पिक रैंडम को यहाँ पे लेता हूँ और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 57, 20 और -171, -219। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये शो होगा और यहाँ पे मैं लूँगा रिपीट अनटिल के अंदर मैं यहाँ पे रखूँगा टचिंग प्लेयर और टचिंग बुलेट। तो मैं कुछ इसको जो है ऐसे रखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं रखूँगा टचिंग बुलेट। यहाँ पे टचिंग बुलेट और इसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसकी वाई पोजीशन को थोड़ा और बढ़ाऊँगा, मतलब मैं थोड़ा इसको नीचे लेके आऊँगा क्योंकि ये तभी जो है टच हो रहा होगा, ये एज को टच हो रहा होगा। तो मैं एज से इसको बाहर लेके आने वाला हूँ, मतलब एज को ये टच नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको लेके आ जाऊँगा लाइक 170 के ऊपर। अब मैं इसको शो करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एज तो टच कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं चेंज वाई बाय रखूँगा। चेंज वाई बाय मैं इसको 6 रखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एज भी रखने वाला हूँ। तो ये जो टचिंग बुलेट है इसको मैं ये वाले और के अंदर रखूँगा और ये पूरे और को मैं ये वाले और के अंदर रख दूँगा। तो आई थिंक ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक और है और इसके अंदर हमने एक और रखा है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ टचिंग एज। मैं इसकी वाई पोजीशन को और बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा 150। तो गो टू एक्स में तो ये रैंडमली आएगा और वाई के अंदर यहाँ पे 150 हो रहा है। ओके, और लास्ट में एक और चीज़ जो कि है यहाँ पे डिलीट दिस क्लोन। तो अभी आप देख सकते हो कि और यहाँ पे मुझे जो है मैंने यहाँ पे एक गलती करी है। यहाँ पे चेंज वाई बाय 6 रखा है मैंने, जबकि मुझे ये -6 रखना चाहिए। तो -6 रखने से क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे जो हैं स्प्राइट्स, हमारे जो घोस्ट हैं वो नीचे आ रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हो हम इनको शूट भी कर सकते हैं। तो अब मैं जो है आपको फुल स्क्रीन के अंदर ये गेम दिखाता हूँ। हमारा गेम ऑलमोस्ट बन गया है, बस हम इनके अंदर लास्ट चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पे गेम ओवर फंक्शनैलिटी। तो हम जो है गेम ओवर कर देंगे जब हमारा जो है कोई सा भी जो घोस्ट है वो या तो हमारे स्पेसशिप को टच करेगा या तो फिर अगर वो एकदम नीचे मतलब जो एज को है उसको टच कर देगा। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पे जो है हम इधर रखने वाले हैं इफ़ कंडीशन। यहाँ पे इफ़ डिलीट दिस क्लोन को मैं सबसे लास्ट में लेके जाऊँगा। ये इफ़ कंडीशन को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करने वाला हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इफ़ कंडीशन रखे हैं और मैं इसको जस्ट इसके ऐसे रखूँगा, दोनों को एक के नीचे एक। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सेंसिंग के अंदर और यहाँ से मैं लूँगा टचिंग प्लेयर और यहाँ से मैं लूँगा टचिंग एज। तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे मैसेज। मैं यहाँ पे एक मैसेज, न्यू मैसेज में ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ। इसका नाम होगा गेम ओवर और
मैं यहाँ पे भी एक ब्रॉडकास्ट रखूँगा, यहाँ से गेम ओवर, दोनों जगह हम सेम ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक नया स्प्राइट पेंट करूँगा, इसका मैं नाम देने वाला हूँ गेम ओवर। तो अब यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट में लिखूँगा गेम ओवर। तो मैं यहाँ पे जो है इसका फॉन्ट जो है यहाँ पे मैं सेरिफ रखूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ गेम ओवर। अब आप देख सकते हो कि हमारा एक गेम ओवर का एक स्प्राइट है और मैं इसको एक जो है डार्क कलर दूंगा। मैं इसको ब्लू टाइप रखूँगा कलर और मैं इसको जो है 0 और 0 के ऊपर लेके आने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये 0 और 0 के ऊपर आ गया है एकदम सेंटर में। मैं यहाँ पे जाऊँगा व्हेन आई रिसीव गेम ओवर और व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, दोनों को मैं यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा अभी लुक्स के अंदर और यहाँ पे मैं रखूँगा शो, व्हेन आई रिसीव गेम ओवर देन शो, और व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक वो टाइम पे यहाँ पे हाइड होगा। तो जो है अब अगर आप देखोगे तो हमारा गेम यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा गेम ओवर हो गया है, बट फिर भी जो है हमारे जो स्प्राइट्स हैं वो आ रहे हैं। तो इनको मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे स्टॉप ऑल, ये चीज़ यहाँ पे हमने रखी है। अब अगर आप देखोगे तो अगर हमारा जो है प्लेयर यहाँ पे मिस कर जाता है तो यहाँ पे गेम ओवर लिख के आया और सब कुछ यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब लास्ट चीज़ हम यहाँ पे एक स्कोर फंक्शनैलिटी लेके आने वाले हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे घोस्ट के अंदर और लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा जो है इफ़ टचिंग हमारा बुलेट, तब जो है हम स्कोर बनाएंगे एक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्कोर का वेरिएबल बनाता हूँ। मैं ये माय वेरिएबल को डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं एक नया वेरिएबल बनाने वाला हूँ स्कोर। अब यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड होगा, जैसे ही जो है हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमको जो हमारा स्कोर है उसको हमको सेट करना पड़ेगा 0 पे। तो इससे जो है हर गेम के स्टार्टिंग में हमारा स्कोर 0 पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही जो है हमारा घोस्ट एक बुलेट को टच करता है तो यहाँ पे हम जो है स्कोर को बढ़ा देंगे। इफ़ टचिंग बुलेट तो इसके अंदर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ चेंज स्कोर बाय 1। तो यहाँ पे अभी हमारा गेम एकदम बन गया है। तो आई होप आप लोग को जो है ये गेम बनाने में मज़ा आया होगा। एकदम इजी गेम था, आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप लोग को यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को ये पूरा कोड जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर देने वाला हूँ। तो आप लोग को ये पूरा कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप लोग जो है यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ये कोड को रेफ़र कर सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए कि आप ये गेम कैसे बना सकते हो एकदम ईजीली। और आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वो बेल आइकन को सेट कर देना ऑल पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Hi everyone, it's Zinnia here. Today I wanted to show you how to make collectible items in Scratch. You might have a game or a project and you want the player to be able to walk around and collect objects, and this tutorial will show you exactly how to do that. Let's get started. So first, let's pick a main character for your project. You could just hover over this button that says choose a sprite and click choose, and you could pick absolutely any main character you'd like. Maybe I'll pick Ben. And I'll also choose a background. Maybe I will pick the forest. You could pick anything you want. Now let's add an item that this character can collect. And you can pick any item that you'd like to have. Maybe I'll pick the star. So let's start by making it so that when you click on the item, it plays a sound. And the way you can do that is go to the sound category and drag out this block, start sound, and this will play a sound. And you can make the sprite do this
every time it's clicked on by going to the events category and dragging out this block when this sprite clicked. So now, every time I click on the sprite, it plays a sound. Now, let's make it so that when I click on the star to collect it, it disappears. So you can go to the looks category, and if you scroll down, there are these blocks, show and hide. And if you drag these out, this block, hide, will make a sprite disappear, and this block, show, will make it appear. So what we could do is make it so that when the sprite is clicked, it starts the sound and then hides, so disappears when you collect it. And to make it show up again, we can say that when the green flag is clicked, show. So let's try that. Okay, nice. So the star reappears when we restart the game. Now, let's make it so that instead of clicking on the item to collect it, the item gets collected when the main character walks up to it, and then the item disappears. So to do that, first let's make it so that this main character can move when we press the arrow keys. So to make a character move, you can just go to the motion category, and if you scroll down, there's this block, change X by 10, and that will make a character go this way. And if you change X by -10, the character goes this way. So we can make it so that when the right arrow key is pressed, the character goes this way, and when the left arrow key is pressed, the character goes that way. And we could do something very similar with making the character go up and down by, if we go back to the motion category, you can drag out this block, change Y by 10, and that will make a character go up. So we can make that happen when the up arrow key is pressed. And you can change Y by -10 when the down arrow key is pressed. Okay, great. Now we have a character who can move with the arrow keys. Now let's make it so that when the character runs into the item gets collected. So let's click on the star, and when the green flag is clicked, let's make the star wait until the Ben sprite runs into it, which you can use this block that says touching to detect that. And after the Ben sprite runs into the star, that's when we can make it do this whole play the sound, collect, and hide. And we can now get rid of this when this sprite clicked block, because we're not going to use that anymore. So let's try that out. So the Ben sprite runs into the star, and then it gets collected, because the star waits until the Ben sprite runs into it, and then once that happens, it does all of this. Oh, and let's also make it so that the star goes to a random position every time the game starts. So let's click the green flag and test that out. Yeah, so now every time the star goes somewhere different, and you can always collect it. Anyway, that's what I wanted to show you today. I hope you have fun making items. I'll see you next time, and scratch on!